Am I visible and audible? Hello, am I visible and audible to all of you? Yes, madam, you are visible and audible. Thank you, sir. So very warm evening once again to respected resource person of today, Dr. Rajiv Chaudhary, sir. Respected officers, respected members of Research Foundation of India, and all dear learned participants who have joined this program. So I owe you once again a very warm welcome in this 2 day session on workshop on approaches to paradigm of scholar. So it is already 5:33, and without wasting much of time, may I request our resource person, Dr. Rajiv Chaudhary, sir, to please proceed for today's program. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Yesterday, in the 8th point, we were discussing about journal impact factor. I will proceed from this point. Madam, is it visible on the full screen? Yes, sir. We have left on journal impact factor, and we have discussed about the meaning of journal impact factor. Again, I repeat, journal impact factor is the number of citations to a journal in a given year from the articles occurring in the past 2 years. That is divided by the number of articles published in the journal in the past 2 years. From this definition, it's clear that minimum 3 years are required to calculate the journal impact factor, and that remains for only 1 year. Every year that may change. We have also discussed about by the help of a hypothetical example. In this hypothetical example, 100 is a count, 100 is a frequency of the citing references appearing 2014 in this hypothetical example to the articles published in the last 2 years, and the last 2 years are 2013 and 2012. And we have to divide this digit, we have to divide this value from the articles published by the journal in the last 2 years, and the last 2 years are 2012 and 2013, since we are going to calculate the impact factor of the year 2014. 100 divided by 200, answer is 0.5. It means that in this hypothetical example, the journal impact factor is 0.5. Nothing new, we have discussed about this. Ladies and gentlemen, we should talk about the history of impact factor also. किसी भी क्षेत्र के बारे में यदि हम ठीक से जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में भी जान लेना जरूरी है. कब ये शुरू हुआ, कब ये कंसेप्ट आया, अवधारणा कब से शुरू हुई. It was created in 60s to select journals for science citation index. Why this was developed? यह विकसित क्यों किया गया? The answer is, this was developed to compare the journals regardless of their size. And the journal, if we compare both the journal impact factor and article impact factor, both are separate issues. And this delays in reviewing and publication that affect impact factor. चर्चा कर चुके हैं कि minimum 3 years are required to calculate a journal impact factor. यदि पिछले 2 वर्षों के आर्टिकल का साइटेशन उल्लेख एक दिए गए वर्ष में किया गया है, तो वो उस जर्नल का इम्पैक्ट बढ़ाएगा. मान लीजिए इफ द रिव्यूअर्स डिले द प्रोसेस, मान लीजिए आपने किसी शोध पत्रिका में अपना शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए भेजा है और उन्होंने डिले कर दिया. इट मे टेक 6 months, 7 months, 1 year or 1.5 years in reputed journals, in top journals which are indexed in PubMed, Web of Science and Scopus.
In that case, that will not be counted for general impact factor. That will not be counted for general impact factor. So this is the weakness. And what influence impact factor? इम्पैक्ट फैक्टर को क्या क्या प्रभावित करता है, इसकी बात विस्तार से करते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर को प्रभावित करने वाले कारक. We know that we publish two types of articles. One is research based articles and second one is review articles. If we compare the citations of both, यदि दोनों के ही यदि उल्लेख की हम तुलना करते हैं, the review articles are cited more often. It means यदि कोई व्यक्ति विशेष रिव्यू आर्टिकल लिखता है तो उसके साइटेशंस अलग होंगे, और कोई शोध पत्रिका रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करती है तो जो रिसर्च आर्टिकल्स, articles which are based on biomedical researches, engineering researches, business studies, management studies, social sciences studies, उसकी तुलना में उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अधिक होगा जो रिव्यू आर्टिकल्स अधिक पब्लिश करता है. तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है. द केस रिपोर्ट्स रेयरली साइटेड. यदि हम केस रिपोर्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे यदि हम भी कोई अपना रिसर्च वर्क करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पीएचडी, इन द फॉर्म ऑफ ए डिसर्टेशन, इन द फॉर्म ऑफ ए रिसर्च पेपर, कोई भी शोध पत्र लिखते हैं तो केस रिपोर्ट का सम्मिलन बहुत कम करते हैं. तो केस रिपोर्ट्स का साइटेशन बहुत कम होगा. उस कारणवश जो शोध पत्र केस रिपोर्ट्स अधिक प्रकाशित करते हैं उनका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा. एंड द रैपिड पब्लिकेशन टाइम that improves, that increases impact factor, जिसका कि पब्लिकेशन, किसी जर्नल के पब्लिकेशंस बहुत अधिक है, समय समय पर यानी मंथली है मान लीजिए, तो संभावना अधिक है. एंड सेल्फ साइटेशंस डिस्टॉर्ट इम्पैक्ट फैक्टर. मैंने अपना एक शोध पत्र लिखा, आई हैव रिटन ए पेपर एंड आई साइटेड माय प्रीवियसली रिटन पेपर्स इन द सेम जर्नल. यदि भूतकाल में जो मैं शोध पत्र लिख चुका हूं उन सब का उल्लेख मैं अपने ही शोध पत्र में करता हूं तो अपने आप ही एक इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा. क्योंकि यदि अगर वो समान जर्नल में मैं प्रकाशित करता हूं, एंड बायस, पक्षपात भी दिखाई देता है टुवर्ड्स रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड्स. जो भी फील्ड्स हैं जो कि एक बढ़ती हुई हैं उनके उसमें बहुत कम आपको साइटेशन देखने को मिलेगा. एंड साइट्स नॉट काउंटेड आफ्टर 2 years. बड़ा ही एक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस ऑफ द इम्पैक्ट फैक्टर कि 2 साल के बाद यदि अगले सालों में कोई भी उस रिसर्च पेपर का जो कि शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ यदि उसका उल्लेख करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं. इट मीन्स दैट शुड बी cited within 2 years. And specialty journal have less impact factors in comparison of multidisciplinary journals. हम सब जानते हैं कि जो शोध पत्रिकाएं हैं एक अलग अलग क्षेत्र की हैं, अलग अलग विषयों की हैं. यदि कोई स्पेशलिटी, इट मीन्स लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बायोमेडिकल फील्ड. किसी बायोमेडिकल फील्ड का यदि हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, और बायोमेडिकल फील्ड में भी एक एग्जांपल है कि रिलेटेड टू मेडिसिन, उसमें एक स्पेशलाइजेशन है, वो केवल मेडिसिन के ही पेपर यदि प्रकाशित करते हैं तो उनका यदि स्पेशलिटी जर्नल्स है उनका इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा उसकी तुलना में जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स हैं. तो कुछ इम्पैक्ट फैक्टर की लिमिटेशंस है. देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर कि इम्पैक्ट फैक्टर की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का भी हमें जानना चाहिए. दिस रिफ्लेक्ट द जर्नल रादर देन द आर्टिकल. किसी भी शोध पत्रिका में, किसी भी जर्नल में जितने भी शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं सभी समान स्तर के नहीं हो सकते. द स्कैटर्डनेस रिमेन्स देयर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. यदि गुणवत्ता की बात करें तो उसमें गुणवत्ता एक जैसी नहीं होगी. तो जो कि जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है दैट रिफ्लेक्ट द जर्नल नॉट एन आर्टिकल. और आर्टिकल बहुत अच्छा भी जर्नल में हो सकता है, निम्न स्तर का भी हो सकता है. अगला है द वेरी विद टाइम इन नंबर्स एंड रैंकिंग. उतार चढ़ाव आता रहता है कि सिंस दिस इम्पैक्ट फैक्टर इज अलॉटेड फॉर ओनली फॉर 1 year, केवल इसको अलॉट किया जाता है केवल 1 वर्ष के लिए, तो
वो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है. Not related to the peer review process. It's one more limitation and can be manipulated by authors and editors. If the authors and editors want to manipulate, they may manipulate this. And how, this is the most important point, how to identify high impact journals in your field. कल की चर्चा में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, और दूसरा कि हु इज ऑथराइज्ड टू अलॉट अस दिस जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर. यदि हम भारतीय विश्वविद्यालयों की, भारतीय महाविद्यालयों की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, तो फॉर अस द यूजीसी रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल. यदि लेटेस्ट यूजीसी रेगुलेशन की बात यदि हम करते हैं, 2018 रेगुलेशन है, उस 2018 रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि द ओनली द इम्पैक्ट फैक्टर specified by Thomson Reuters according to the journal citation reports, only that will be counted. कोई दूसरी एजेंसी है, दूसरी संस्थाएं हैं, कोई दूसरा, जैसे yesterday Madam Archie informed about the global impact factor, no, that will not be counted. यदि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, यदि पीबीएस की बात करें, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम की बात करें, प्रमोशंस की बात करें, फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर, फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर, और फ्रॉम प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर, यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात करें, फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर एंड डायरेक्टर टू डिप्टी डायरेक्टर टू डायरेक्टर, तो फॉर दैट वी हैव टू acquire some academic performance indicators in the form of a PBAS, performance based appraisal system. So in that only the journals which are having the impact factor given by Thomson Reuters will be counted. कोई दूसरे जितने भी एजेंसीज हैं उन सब का impact factor that is useless for us. How to identify high impact factor journals in your field, in any field, maybe in medical sciences, maybe in engineering, maybe in physical education, maybe in education, किसी भी क्षेत्र की किसी भी विषय के में हम कैसे, तो we should visit the site insights, that is General Citation Reports by Thomson Reuters, and that JCR, General Citation Reports from Thomson Reuters, that is controlled by Web of Science. We may find out, हम यहाँ से देख सकते हैं, and in that we have to click on journal by rank and we have to select a category, और इसमें हमें category को select करना है, maybe geography, maybe physical education, maybe healthcare, maybe health policy and services, and we have to we can find out the general impact factor. See in this on the screen, you are seeing that the nature, the impact factor is 11.74, and second ranked journal is Annual Review of Earth and Planetary Sciences, having the impact factor of 8.58. So we can find out from this site why is it important to publish in high impact factor journals. यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में ही अपने शोध पत्र प्रकाशित करें. क्या दूसरे जर्नल में प्रकाशित करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? पहला तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, ओनली द स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल marks will be given to the journals which are indexed in which are having impact factor assigned by Thomson Reuters. इसकी चर्चा हम कर चुके हैं. इसके अतिरिक्त और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यस इट इज इंपॉर्टेंट टू पब्लिश आवर पेपर इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स. प्रमोशंस के लिए तो हम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिश और पेरिश. वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न एंड नॉलेज एरा. उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर वी हैव टू पब्लिश और वी हैव टू. डॉक्टर अर्ची ने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी ड्यूरिंग माय इंट्रोडक्शन, she included this key. We are living in an era where we have only two options, publish or perish. Second one is
greater visibility to research journals. Third one is increased chances of citations. यदि हम हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में अपने शोध पत्र प्रकाशित करते हैं तो हमारा उल्लेख दूसरे शोधार्थियों द्वारा अधिक किया जाएगा. That will increase our citation. और हमारा citation बढ़ेगा तो that will increase our H index. और H index से नहीं, हमारा G index भी बढ़ेगा, हमारा I-10 index भी बढ़ेगा. अगली बात करते हैं greater recognition among peers. कल हमने बात की थी एक, यदि आप प्लीज ट्राई टू रिकॉल, याद करने का प्रयास कीजिए. दो बिंदु मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर, तो जिसमें कि जो रॉबर्ट ग्रीन ने जो साइकोलॉजिकल लॉज थे उसमें दो लॉज की बात की थी हमने कि स्टैंड अबाउ द क्राउड, और दूसरा था कैलकुलेटेड वैल्यू. दिस फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट कैलकुलेटेड वैल्यू. कैलकुलेटेड वैल्यू मीन्स that is related to name and reputation, your recognition. So you will get a great recognition among the peers if we publish our papers in high impact factor journals, and associated benefits such as promotions, productivity, our allowances in some universities, in the top universities of the world. यदि विश्व के एक प्रख्यात विश्वविद्यालयों की हम बात करें, उसमें से अगर हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में अपने शोध पत्र प्रकाशित करते हैं तो एक स्पेशल प्रमोशंस का ऑप्शंस भी है और एक स्पेशल अलाउंसेस का भी ऑप्शंस है. इन आवर कंट्री दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बट इन टॉप यूनिवर्सिटीज some private organization, some top private organization is provides this facility to their teachers. Which manuscript is published in high impact factor journals? कि हम कैसे शोध पत्र लिखें जो कि एक्सेप्ट हो, स्वीकार्य हो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में. किस प्रकार के शोध पत्र वो एक्सेप्ट करते हैं जिससे कि हम अपने शोध पत्र, अपने रिसर्च पेपर्स प्रकाशित कर पाए हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में. तो ओनली देयर आर फ्यू पॉइंट्स वी नो दैट कि वर्क ऑफ एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट्स. यदि हम थॉमसन ड्यूटर्स के हाई वेब ऑफ साइंस का, जो थॉमसन ड्यूटर्स का हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, उसमें अगर हम अपने शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं तो उसमें वर्क ऑफ एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट. तो यहाँ पर जो एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट की बात आई तो यहाँ पर तो वही आई कैलकुलेटेड वैल्यू. एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट मींस having a reputation, having a name. Next one is results of journal interest. If that is applicable to the whole society, then that will be accepted, and the novelty of findings. यदि already existing facts में एक slight addition हुआ, if slight addition is there in the already existed facts, in that case there will be chances of not accepting our research papers. If it's entirely new, in that case there will be great chance to accept our papers for publication. Next one is concise and well written. I have explained yesterday, कल बात मैं कर चुका हूं कि हमारे पेपर्स के निरस्तीकरण का, रिजेक्शन के दो मुख्य कारण हैं. पहला, वी आर वीक इन डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स, हमारा डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स भी बहुत कमजोर है. और दूसरा है our लैंग्वेज. यदि वो कॉन्साइज है, प्रिसाइज है और उसके बाद वेल रिटन है इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म ऑफ एक साइंटिफिक एडिशन, दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन. अब बात करते हैं, वन मोर कंसेप्ट इज देयर. एक वीकनेस थी जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर की. यदि जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर की यदि हम बात करते हैं कि देयर वाज ए वीकनेस, जो कल चर्चा की कि क्या वीकनेस थी उसकी, कि 3 साल की अवधि चाहिए और 1 साल के लिए आवंटित है. ये इसकी कमी थी और कमी है. तो उस दशा में देयर इज वन मोर कंसेप्ट, एक दूसरी अवधारणा भी है, 5 ईयर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर. क्योंकि कुछ टॉप जर्नल्स हैं, उनका रिव्यूइंग प्रोसेस है. जो रेफरीड जर्नल्स हैं, टॉप इंडेक्स्ड जर्नल्स हैं, उनका जो रिव्यू प्रोसेस है उसमें एक दीर्घकालिक समय लगता है उसमें. उस वजह से एक कंसेप्ट आया, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर. एवरीथिंग इज सेम. इंस्टेड ऑफ 3 years, in this
5 years are required to get 5-year journal impact factor. The 5-year impact factor is the average number of time of articles from the journals published in the past 5 years have been cited in the journal citation reports year. It is calculated by dividing the number of citations in the JCR year by the total number of articles published in the 5 previous years. Instead of 2, 5 years are required. So, एक नए बिंदु की अब चर्चा करते हैं. In the 9th point, we will discuss about the citation analysis. And the question arises, what do you mean by citation analysis? Citation analysis से हम क्या समझते हैं? So citation analysis means counting citations is often called citation analysis. उसकी frequency, उसके counts, कितने बार उल्लेख किसी व्यक्ति विशेष का किया गया, वही citation analysis है, वही उल्लेखों का विश्लेषण है. कोई एक शोधार्थी के शोध पत्र को अपने शोध पत्र में कोई दूसरा शोधार्थी उसका उल्लेख करता है, उसका विश्लेषण करना ही citation analysis है. This is a subject of discussion or criticism in the discipline. Why? When we are performing a citation analysis, यदि हम उल्लेखों का विश्लेषण करते हैं, if we perform a citation analysis, we should use several resources. We should not depend on a single source. We should not depend on a single resource to count the citations in order to fully capture an article's impact. यदि किसी भी आर्टिकल का, किसी भी लेख का इम्पैक्ट यदि हम पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमें किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. We should use several resources. तो उसके लिए हमें चाहिए, for that we require citation databases, और उसके लिए हमें चाहिए citation databases. अब प्रश्न उठा कि ये citation databases क्या है. citation की चर्चा तो कर चुके हैं. citation means number of when any individual cite any researcher's paper, that is considered as a citation. So what do you mean by citation database? So citation means citing a statement. किसी भी कथन का उल्लेख करना ही citation है, और quote करना, if any individual any researcher is quoting someone, that is considered as a citation. And this database means data bank, where everything is stored. Everything means where the citations are stored. तो कुल मिलाकर अर्थ हुआ द डेटा बैंक शोइंग द साइटेशंस, ऐसा डेटा बैंक जहां पर संग्रहित है साइटेशंस, उल्लेखों का विवरण. द डेटा बैंक शोइंग द साइटेशंस, और वी कैन से दैट द डेटा बैंक शोइंग द मैट्रिक्स. तो अब कौन कौन से हमारे पास साइटेशन डेटाबेसेस हैं जो कि प्रचलन में है. आई विल डिस्कस अबाउट द citation databases which are in practice, which are in tradition. These are the several tools can help us to find out how many times a specific article, how many times a specific author, and how many times a specific journal has been cited. तो ये citation databases केवल आर्टिकल का ही उल्लेख नहीं दर्शाते हैं, किसी लेखक का ही उल्लेख नहीं दर्शाते हैं, किसी शोध पत्रिका का ही उल्लेख नहीं दर्शाते हैं. These provide us the number of citations to a specific article, to a specific author, as well as to a specific journal. And these tools are referred as citation databases. जो किसी आर्टिकल का उल्लेख दर्शाता हो, या किसी ऑथर का उल्लेख दर्शाता हो, या किसी जर्नल शोध पत्रिका का उल्लेख दर्शाता हो, वो ही कहलाते हैं साइटेशन बेस्ड डेटाबेसेस. तो कौन कौन से साइटेशन डेटाबेसेस प्रचलन में है, तो यहाँ पर केवल 3 साइटेशन डेटाबेसेस की चर्चा करेंगे. आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द 3 डिफरेंट साइटेशन डेटाबेसेस. फर्स्ट वन इज वेब ऑफ साइंस, second one is Scopus, third one is Google Scholar. तीनों की ही, वेब ऑफ साइंस की, स्कोपस की, गूगल स्कॉलर की, तीनों की ही विस्तार से चर्चा करते हैं. आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट all 3 citation databases named
वेब ऑफ साइंस, स्कोपस एंड गूगल स्कॉलर। पहले से शुरू करते हैं वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस ये हमारी सेवा में है, हम सबकी सेवा में है since 1963, and it's having the very good coverage of sciences compared to social sciences, arts and humanities. यदि हम विभिन्न विषयों की तुलना करें, the coverage, this covers the articles, this covers the authors, this covers the journals which are from the field of science in comparison to social science, humanities, arts, business studies, etc. But this is US and English language based, and limited coverage of non-English language titles, but the full coverage of citations is there. उल्लेखों का पूरा कवरेज करते हैं, but there is a limited downloading options. Why? Since it is paid, क्योंकि यह paid है तो इसमें downloading options कम है। अब बात करते हैं थोड़ा और विस्तार से। This has different subsections. इसके उपभाग हैं कुछ। This is subdivided into different sections. First one is Conference Proceedings Citation Index. This covers more than 1,60,000 conferences titles in the science starting from 1990 to the present day. Second section is Science Citation Index Expanded. This covers journals. This covers more than 8,500 notable journals from 150 different subjects, different streams, different disciplines. And the coverage is present from 1900 onwards. And the third section is Social Science Citation Index. This covers more than 3,000 journals in the social science disciplines, and the range of coverage is from the year 1900 to the present day. Out of all sections, out of all subsections, we have discussed about three. The fourth section is Arts and Humanities Citation Index. This covers more than 1,700 arts and humanities journals starting from 1975. In addition, 250 major scientific and social science journals are also covered. So if we compare second category and the fourth category, second category I mean Science Citation Index Expanded, that covers 8,500 journals, notable journals. But on the other hand, in the fourth point, in case of Arts and Humanities Citation Index, this covers only 1,700 journals. As I have said earlier that, यदि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि हम तुलना करें साइंस की और सोशल साइंसेस की, तो साइंस सब्जेक्ट्स का, विज्ञान के विषयों का कवरेज अधिक है एक ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की तुलना में. द फिफ्थ इज इंडेक्स केमिकस that lists more than 2.6 million compounds. The time of coverage is from 1993 onwards and to the present day. And the sixth is current chemical reactions. This indexes over 1 million reactions, especially from the scientific subjects, and the range of coverage is from 1986 to the present day. This RQs from 1840 to 1985 are also indexed in this database. And the last one is, earlier there was no section of book citation index, only research articles were included, but at present there is a subsection of book citation index that covers more than 60,000 books starting from 2005 onwards. So in conclusion, we can say that yes, this covers conference proceedings also. This covers social science journals from the science subjects, journals from humanity, journals from social science. Also includes index chemicus or current chemical reactions, and books are also included in this.
Next one is another database is Scopus. एक दूसरा डेटाबेस है कहलाता स्कोपस. अब थोड़ा स्कोपस के बारे में बात करते हैं. स्कोपस, यदि स्कोपस की बात करें तो that was launched by Elsevier in the year 2004 and source back to 1960. 1960 के बाद जो भी शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं एक स्तरीय शोध पत्रिकाओं में उनको सम्मिलित किया गया है इसमें. And the excellent for physical and biological sciences compared to social science, humanities and arts. This Scopus also has a weakness same as Web of Science. Web of Science में जो कमियां थी एक वो कमी इस स्कोपस में भी है. यदि हम विज्ञान संबंधी विषयों की तुलना ह्यूमैनिटीज से करते हैं या सोशल साइंस से करते हैं तो विज्ञान विषय का सम्मिलन अधिक किया गया है. दिस इज एक्सीलेंट फॉर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज in comparison to arts, humanities, and social sciences. Next is this has a better international coverage. That is 60% of titles are non-US and better coverage of social science titles than Web of Science. यदि फिर भी हम तुलना करते हैं Web of Science में, इसमें social sciences के titles अधिक हैं in comparison to Web of Science and better coverage of non-English language. And publications from different corners of the Europe is also included in this. Not only Europe, the citation database is only available for the papers published from 1996 onwards. But this does not include books, book chapters and theses, and easy to use in searching the source publications. And the citation tracker works up to 1000 records only and same as Web of Science. जो Web of Science में था वह इसमें भी है कि there is a limited downloading option since it's paid. Out of all databases, out of all three databases, we have discussed about two, that is Web of Science and Scopus, and the third database is Google Scholar. It's 100% free. Google Scholar, it was launched in the year 2004 and better coverage of much wider range of materials than Web of Science as well as Scopus for all citations as it retrieve web, and more coverage of references also. The references papers are also included in this, and better coverage of non-English language. जो weakness थी Web of Science में, जो weakness थी Scopus में, इसमें the publications from Africa, the publications from Asia, the publications from Central and South America are also included than Web of Science and Scopus. But there is no source of list or indication of time scale covered. The coverage is not clear which article is included, which article is excluded. The criteria is not shown. What is the inclusion criteria? That is not open. And very limited search options are there in this, and no separate cited author search. But the important point is the source back is to 1990, not more than that, but it's 100% free. ये पूरी तरह से निःशुल्क है. तो I will show you all these three. मैं तीनों को ही आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. गूगल स्कॉलर को भी, वेब ऑफ साइंस को भी, स्कोपस को भी, एंड वी कैन सी गूगल स्कॉलर में. और हम फैसिलिटीज की बात करें कि कौन कौन सी सुविधा हमें गूगल स्कॉलर प्रदान करता है. If we talk about the facilities provided by the Google Scholar, we can track the citations of our publications. हम अपने शोध पत्रों के उल्लेख को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं. And we can also check who is citing our publications. हमारे शोध पत्रों का उल्लेख कौन कर रहा है उसको भी हम देख सकते हैं. And we can graph our citations over time. हम अपने citations का एक graphical representation भी ले सकते हैं. And we can compute the citation metrics in a graphical form. And we can view the publications by the colleagues, keep up their work,
and see their citation metrics. केवल हम अपनी ही एक अनुसंधान के क्षेत्र की उपलब्धियों को नहीं देख सकते, बल्कि साथ साथ हम दूसरे अपने साथियों की, दूसरे एक अनुसंधानकर्ताओं की, शोधार्थियों की के पब्लिकेशंस के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके उल्लेखों के बारे में, उनके मैट्रिक्स के बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है. नेक्स्ट इज हाउ टू पब्लिसाइज योर पब्लिकेशंस. हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो केवल लाइब्रेरी की शोभा न बढ़ाए, उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो, जिनका जर्नलाइजेशन अधिक से अधिक हो. उसलिए हमें जानना होगा कि हाउ टू पब्लिसाइज आवर पब्लिकेशन. तो पब्लिसाइज के बहुत से तौर तरीके हो सकते हैं. एक से वी ऑल आर फैमिलियर अबाउट द रिसर्च गेट. रिसर्च गेट इज आल्सो प्लेटफॉर्म ऑन विच वी कैन पब्लिसाइज आवर पब्लिकेशन, जिस पर हम अपने पब्लिकेशंस को पब्लिसाइज कर सकते हैं. ResearchGate is a social networking website for scientists, and the researchers launched in the May 2008. And this platform, the platform can be used to share papers. On this platform, we can share our papers. Not only we can share, we can we can ask questions and answer questions asked by another researchers, and we can find the collaborators. मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि आई ऑल्सो वर्क विद कोलैबोरेटर्स, और उन कोलैबोरेटर्स को मैंने ढूंढा. आई सर्च्ड द कोलैबोरेटर्स ऑन दिस रिसर्च गेट प्लेटफॉर्म. एक सबसे महत्वपूर्ण बात ऑर्किड. वी शुड क्रिएट आवर आईडी ऑन ऑर्किड. फुल फॉर्म इज ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी. हम सब जानते हैं कि वी आर यूजिंग आधार कार्ड. आधार कार्ड क्यों हम यूज करते हैं? सिंस इट्स a unique ID that is linked with the bank account, that is linked with our gas connection, that is linked with our PAN, permanent account number also, and that is also linked with the individuals having the new pension scheme, that is permanent retirement number. So same as Aadhaar card, this ORCID, Open Researcher and Contributor ID, is a unique ID for any researcher. Every researcher should have this ORCID, Open Researcher and Contributor ID. And Open Researcher and Contributor ID is a alphanumeric code to the uniquely identify scientific and other academic authors and contributors. This consists of 16 digits. This consists of 16 digits. And this, what are the benefits of ORCID? ओपन रिसर्चर और कंट्रीब्यूटर आईडी के हमें लाभ क्या मिलते हैं, क्यों हम रखें? तो आई विल डिस्कस अबाउट द benefits of ORCID, benefits of open researcher and contributor ID. हम सब यदि अपनी बात करें, if we talk about ourselves, we published our articles by different names. Let us take an example. My name is Rajiv Chaudhary. I published my few articles by the name Rajiv Chaudhary, as well as I published my articles by the name Chaudhary Rajiv or R Chaudhary or Chaudhary R. Many researchers share the same name, while others' name change throughout their career. Maybe after marriage, in case of females, with an ORCID, we can persistently associate our name with our research works. Different journals specify a specific way to write the names. Some require surname first, some require main surname at the last, some require abbreviations. So we can put all the names on a single platform.
in Springer Natures as well as in many other publishers article which are having the reputation in the reputed journals. The submission system, we have the option of including your ORCID, and by clicking on that icon and ORCID icon, any individual can see your detail. Third one is the ORCID icon will appear next to your name in the article. Clicking on the icon will take readers to your profile, your complete profile. I will show you the profile, उस पूरी प्रोफाइल को आप प्रदर्शित करूंगा आप सबके समक्ष on orchid.org and allow them to discover your further publications. And one more benefit is, the fourth benefit is, it can enhance our ORCID record with our professional information and link to other identifiers. That is the most important benefit provided by the open researcher and contributor ID, that is ORCID. ORCID द्वारा प्रदान की गई सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है, और इस सुविधा को मैं प्रदर्शित करूंगा आपके सामने कि this ORCID ID is linked with Scopus ID. This ORCID ID is linked with Web of Science ID, and this is linked with Vidwan also. I will discuss about Vidwan also. तो अगले उसमें हम बात करते विद्वान की। तो कुल मिलाकर अभी तक की चर्चा में हमें एक अपनी आईडी ऑर्किड पर रखनी चाहिए, और to publicize our publications we should have our account on ResearchGate also, and we should have our ID, we should have our ID on Vidwan also. Vidwan पर भी हमारी आईडी होनी चाहिए, we should have ID on Vidwan. तो विद्वान क्या है? विद्वान is a premier database of the profiles of the scientists, researchers, and other faculty members who are working at leading academic institutions, maybe universities, maybe colleges, maybe institutions of national repute, and other research and development organizations involved in teaching as well as in research, especially in India, especially in our country. हमारे देश में जितने भी एक साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं या दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि शैक्षणिक पेशे से जुड़े हैं, which are involved themselves in academic pursuits, तो या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो ये सुविधा हमें प्रदान की गई है विद्वान की। आई विल शो यू विद्वान ऑल्सो, मैं आपके समक्ष प्रदर्शित करूंगा विद्वान को भी। तो विद्वान की फैसिलिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि विद्वान हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है। विद्वान प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, द रिसर्चर्स बैकग्राउंड, द एक्सपर्ट बैकग्राउंड के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी होगी। द कॉन्टैक्ट एड्रेस, your experience also, your experience will be displayed in a chronological way, year wise. Your scholarly publications are also included on Vidwan automatically, and your skills, what type of skills you are having, कि आप किन कौशलों से परिपूर्ण है, उनका उल्लेख भी विद्वान पर होगा। Your accomplishments and your researcher identity, and this Vidwan is linked with other databases also, and we have discussed about different databases. We have discussed about Scopus, this is linked with Scopus. We have discussed about Web of Science, that is researcher ID, that is linked with the researcher ID also. We have discussed about Google Scholar, this Vidwan is linked with Google Scholar also. And who developed and maintained this database, इस database को किसने विकसित किया और कौन इसकी देखरेख करता है, यदि उसके बारे में बात करें, ये बाय इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी
Networks and Center in FlipNet, with financial support from the National Mission on Education through ICT. The database would be instrumental in selection of panel of experts. If you want to select the panel of experts, we can search. There is a facility of to search for various committees. If you want to constitute any task force, we can search from there. And established by the ministries, government organizations, government establishments for monitoring and evaluation purposes. It's having a fructiferous effect. What are the objectives of Vidwan? किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विद्वान ये सुविधा में विद्वान की सुविधा में प्रदान की गई है? If we talk about that, very quickly and conveniently provide information about the experts to peers, prospective collaborators, funding agencies, policy makers and research scholar in the country. एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें सब मिलेंगे. तो आप we can find out the collaborators also for a joint work, for joint publications also, for joint research projects also, and we can identify peer reviewers for articles and research proposal, and we can discover the prospective collaborators for ongoing research projects, and we can establish the communication directly with the experts who possesses the experts needed by the users. हम अपनी आवश्यकता अनुसार we can search the experts, we can communicate directly without any gap in between, to create information exchanges and networking opportunities among the scientists. This provide the Vidwan provides these facilities to us, and another is researcher ID. Now, I will discuss about the researcher ID. That is the second last part of my presentation. After that, I will show you the demonstration. If we talk about the researcher ID, this researcher ID provides a solution to the author's problem within the scholarly research community, and each member is assigned a unique identifier to enable researchers to manage their publication list. We can track their citations, certain accounts. We can track H-index. We can see our H-index also, and we can identify potential collaborators, same as Vidwan, same as Scopus, and avoid author misidentification. My name is Rajiv Chaudhary. There are several individuals having the same name, Rajiv Chaudhary, but by the help of creating this ID, the researcher ID, we can avoid authors misidentification. And in addition, our researcher ID information integrates with all, same as we have discussed during the discussion of Vidwan. विद्वान के संबंध में जब हम चर्चा कर रहे थे तो चर्चा हुई थी विद्वान is connected with Web of Science, Vidwan is connected with Scopus, Vidwan is connected with Google Scholar. Same as Vidwan, this also Web of Science is connected with ORCID, and allowing us to claim and showcase your publications from a single one account, and we can find out the collaborators. Same as all these databases provide this facility, we can find out the collaborators. Yes, सुविधा हमने हमें एक विद्वान भी दे रहा है, ये सुविधा हमें ऑर्किड ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी भी दे रहा है, ये सुविधा हमें रिसर्च गेट भी दे रहा है. So we can review publication list also. So we can also explore how research is used around the world. So we can find out that before discussion of NCBI, National Center for Biotechnology Information की चर्चा से पहले तो थोड़ी चर्चा करते हैं सभी की. तो शुरू करते हैं. Let us start with the Vidwan. Vidwan से शुरू करते हैं. मैडम मर्ची, is it visible? जो दिखाई दे रहा है? Yes, sir.
विद्वान से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद विद्वान. This is the Vidwan profile page. We can log in as an expert. Essential is अनिवार्य क्या है कि we can create an account by Google account as well as by LinkedIn account. So I am going to log in by the help of our Google account. Since I have created earlier, क्योंकि मैं अपने ID create कर चुका हूं पहले से ही, तो इसी बात करते हैं. This has your complete information. कुल मिलाकर if we talk in layman's language, एक सामान्य सी भाषा में बात करते हैं, हम सबकी पूर्णतः जन्म पत्री इसमें है. Your profile score will be shown. Out of 10, you will get the score as per your achievements. You can it will on the basis of your informations on this, you can create your curriculum, your biodata. I am clicking on this CV. So my CV will be created C, and this will convert into the PDF. And I am going to open this PDF, और मैं इस PDF को open करने जा रहा हूँ. देखिए आप, in a specific format, your biodata will be created. See, of different pages. In this biodata, there is a specific format of that. कि your name, your photograph, जो आपने अपलोड की थी, your email ID, एक आपका प्रोफाइल फॉर्मेट में. इस लिंक पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली he or she will reach at your विद्वान ID, and आपकी ओपन रिसर्च और कंट्रीब्यूटर ID भी इसका उल्लेख भी होगा. your phone number, your address, and your expertise, and your work experience in a chronological way, and your education, and your awards and honors, your research projects, your publications. There is a specific format. Again, I am going to that Vidwan. See this Vidwan. So we have discussed about this. We can download our CV, and we can reset our password also. This is the Vidwan ID, and one link is provided. You can copy your link. You can copy this link address and you can paste on your biodata, in your biodata. If any qualifications, your publications, your research projects, and by clicking on that, this any organization, any individual can see. And this includes there are subsections. Your education and educational research journey will be shown in this. Your personal information, your date of birth, your contact information, your experience, your educational qualifications, your awards, and your membership in the committees, your research projects, all are included in this. And the main part is your publications. On clicking on these, any individual can see your publication. Suppose I have opened this with one, and if I click on this, in that case, if you are having a link of your article, in that case, suppose I am clicking on this. See this. One more facility. We have discussed about the facility. Separately, your expertise, your experience, your qualifications, your academic identity, your publications. If any individual is lacking in any area, a personal focus on more on that. As I have said earlier, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि this is linked with your ORCID. Scopus, this is linked with your research ID. That is a part of the Web of Science, and this is linked with our Google Scholar. We will see. Now we will see ORCID. From my Vidwan ID, I am going to click on the link of. तो अब ORCID का Open Research और Contributor ID की बात करते हैं. All are linked with each other. अब ये बात करते हैं, तो ये
6 in this also, your name is shown on this, and the individual is known by 3 more different names: R Chaudhary, Chaudhary R, Chaudhary Rajiv. Your employment details will be there. जितनी भी employment की details हैं वो सब इस पर प्रदर्शित होंगी. Your invited positions and distinctions. जो एक फॉर्मेट है विद्वान का और ऑर्किड का, both are different. दोनों ही एक the research work you have done by the financial support of any funding agency, your works, your publications, और उसके अतिरिक्त भी काफी है. तो all details are present on this. Automatically this will track your all publications automatically. And same as Vidwan, जैसा कि विद्वान में था, the Vidwan is linked with ORCID, and this ORCID is also linked with this Vidwan. See the Vidwan from this my ORCID ID, from this my open researcher and contributor ID, I am going to click on the Vidwan ID. My Vidwan ID will be opened. All are interlinked. So again I am going back to Vidwan. अभी मैं दोबारा से विद्वान की तरफ चलता हूँ. विद्वान से हम कहाँ गए थे? From my Vidwan ID, I clicked on ORCID. Now I am going to click on Scopus. Since this Vidwan is linked with Scopus also, but that ORCID is also linked with Scopus, I am going to click on this Scopus. My Scopus ID will be opened. तो as a researcher, एक शोधार्थी के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में हम सबकी आईडी होनी चाहिए. Since it doesn't allow from my institutional internet connection, I can enter in this. From this connection, since I am using my personal mobile for internet purposes, so it is not possible to open this. But this is linked with Scopus. This is linked with Google Scholar also. I am going to click on this Google Scholar link. See the Google. What type of facilities are provided by the Google Scholar? कि Google Scholar किस प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान करता है. This provides us the citations, number of citations. कि your total citations will be shown. The citations since 2017 will be shown. Your H index will be shown. Your item index will be shown. And we have discussed earlier about the H index, the highest number of papers a scientist has, that has at least that number of citations each. ये कंसेप्ट था किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की वह अधिकतम संख्या जिसमें प्रत्येक का कम से कम उतनी बार उल्लेख किया गया हो. तो ये कंसेप्ट था. तो in this H index is 6. Since there are 6 papers, this fulfills this criteria. There are 6 papers having the 6 citations each, minimum 6 citations each. Item index की सुविधा भी प्रदान करता है. और हम इसकी कल बात कर चुके हैं. We have discussed yesterday कि highest number of papers a scientist has that have at least 10 citations each. तो ये केवल 2 ऐसे शोध पत्र हैं, केवल 2 रिसर्च पेपर्स हैं जिनकी 10-10 साइटेशन है दोनों की. और ये सुविधा देखिए, this is linked with your co-authors. यदि आपके कोई co-author हैं तो उनसे भी linked है. You can see I am having one collaborator and a joint author from Poland. I am going to link on this. इस पर लिंक तो his details will be shown. इनकी जितनी डिटेल है, इनका citation है 276 है, H index है 7 है, item index 4 है. तो this provides us the facility. Or I have also written a few papers with Madam Archie. So since her name is there in this ID, by clicking on this, his account will be open. I can see his, not only any individual can see his or her details, his publications, his her citation, her H index, her item index, her publications we can see. And we can create a graphical representation. We can create a matrix in the form of a graphical representation. See, and we can save this. This will be shown.
from 2013 to, yani I published my first paper in the year 2013, and it means my first citation was in 2013 and the latest citation in 2022. All we can create this graphical representation of our metrics. So we have discussed about all these. That is, we have discussed about Scopus, we have discussed about Web of Science, we have discussed about. तो अब बात करते हैं, अगेन आई एम गोइंग बैक टू विद्वान. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी है जो कि रिसर्चर आईडी है, उस पर भी हमारी आईडी होनी चाहिए एज ए रिसर्चर. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. इस पर क्लिक किया. दिस इज ऑल्सो नॉट फाउंड सिंस आई एम यूजिंग माई पर्सनल अकाउंट. इंस्टीट्यूशनल आईडी से यदि मैं अगर क्लिक करें उसको लॉग इन करता हूं, इन दैट केस दैट विल बी ओपन. तो ये बातें थी सब. तो कुल मिलाकर निष्कर्ष हमने निकाला कि वी शुड हैव एन आईडी ऑन स्कोपस, वी शुड हैव एन आईडी ऑन, वी शुड हैव रिसर्चर आईडी, और जो सबसे महत्वपूर्ण तो दो हैं, और कहीं हमारी आईडी हो ना हो, एज ए रिसर्चर अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में हमारे आईडी हमें ऑडिटेड पर, ओपन रिसर्चर और कंट्रीब्यूटर आईडी पर होनी चाहिए और विद्वान पर होनी चाहिए. अब बात करते हैं बचे भाग की एनसीबीआई. Sir, I have a question over here. Yes, yes. I have not published, I'm sorry to interrupt you in between, but as I have not published any of the, publication there in the Scopus or Vidwan, but still it works if I make an account without giving any publication over there? मैडम विद्वान का कोई पब्लिकेशन का विद्वान का कोई पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है. No, I'm talking about Scopus and also. Yes, yes. At least we should have one paper in Scopus. Then we should open an ID. Otherwise, there is no need. But this is what exactly I'm asking. Yes, but on Vidwan and on that Web of Science, yes, without publishing a single article, आपका single article भी Web of Science में नहीं हो, तब भी in that case also we can create an account on researcher ID. That facility is available on researcher ID. But this yes, is in case of Scopus, you are right. Only in case of Scopus. I have to have a one paper at least over there. Yes, yes, yes. Otherwise, there is no need. There is no exactly. use. But I have only few papers indexed in Web of Science. But my all papers are included in my researcher ID. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Welcome, madam. Now, again, the last part of my presentation, National Center for Biotechnological Information. What is the need to discuss about this? इसकी चर्चा करने की हमें आवश्यकता क्यों है? NCBI, National Center for Biotechnological Information. यदि हम National Center for Biotechnological Information की बात करते हैं, the National Center for Biotechnology Information is a part of United States National Library of Medicine, that is known as NLM. It is a branch of National Institutes of Health. It is a branch of NIH. And why NCBI? NCBI की बात क्यों करें? Every individual is familiar about Scopus and Web of Science. Nowadays, every individual wants to publish his or her papers in a Web of Science or Scopus index journals. But there is one more, a reputed name, that is known as PubMed. That is a reputed name of the medical sciences, biomedical researches. If we want to publish our papers in PubMed index journals, then we should have an idea about the NCBI, National Center for Biotechnological Information. So the NCBI, that is the National Center for Biotechnological Information, houses a series of databases relevant to biotechnology and biomedicine. And it is an important resource of bioinformatics tools and services. And the major database include GenBank for DNA sequences and PubMed. As I have said earlier, मैं पहले भी बता चुका हूँ PubMed. It's a reputed name in the in biomedical researches.
and a bibliographic database. The individuals associated with psychology, the individuals associated with physical education, the individuals or the researchers associated with education, the individual associated with different scientific subjects, they can also publish their papers in PubMed index journals. If they have any medical related variable, maybe blood counts, maybe there are different variables, and the other database include the NCBI epigenomics database. All these databases are available online through the Intel's search engine. So thank you very much. Now, if you want to see any type of demonstration, any type of discussion, any type of data analysis, if you want to discuss about the data analysis tool, if you want to discuss about any statistical tool for analysis purposes, I will show you. I will show you with the demonstration, with hypothetical examples, if you want to discuss about that. Or now your questions are invited, Madam Archie. Sir, good afternoon. Please give me a few minutes time, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, sir. I am a MPA qualified completed student, TMU University, Muradabad. Yes. My name is Sir Shekhar. So सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत प्रणाम सर, क्योंकि आप फिजिकल से रिलेटेड हैं, तो मेरे सर फ्यूचर प्लानर भी हो सकते हैं सर आप मेरे एज ए बेस्ट सुपरवाइजर इन माय रिसर्च सेक्टर। सर 2-3 सवाल है मेरे पास। मैं 2 दिन से आपके जो अच्छे टिपिकल पॉइंट्स थे उसको मैं सुन पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे आपसे पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपने जब परमिशन दिया कि सवाल पूछें तो मुझे लगा कि अब पूछना चाहिए। श्योर। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सर बताएं। ईमेल आईडी में लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। सर थोड़ा शो करा दीजिए ना, जैसे शो हो रहा था अभी स्क्रीन पे, मैं नहीं ले पाया था। और सर फिर आपका ये कब इस टाइप का फिर से किस दिन होगा, ये भी पता होना चाहिए हम लोग को, आने वाले एक एक्सपेक्टेशन। Madam Archie, Dr. Archie will inform you since she is coordinator. डेफिनेटली सर ईमेल आईडी मैंने लिख लिया है सर। अब सर मुझे ये बताइए सर, फर्स्ट सर मोबाइल नंबर सर प्लीज। वैसे मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा, लेकिन बहुत अधिक काम हो तब। सर मोबाइल नंबर और एक टाइम बता देते स्लॉट सर, ताकि हम रिसर्चर। हाँ सर, थैंक यू सर। You should request to the organizers to conduct the workshop as per your interest. If you want to discuss about the data analysis by the help of Excel, if you want to learn about the data analysis by the Minitab, by the help of SPSS, if you want to discuss in detail about parametric statistics, non-parametric statistics. Yes sir. गुरुदेव, एक सवाल था, मेरा क्वेश्चन था आज के आपके प्रेजेंटेशंस के बिहाफ में। क्या वेब ऑफ साइंस में आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन सभी के पेपर इक्वल काउंट होते हैं यूजीसी नॉर्म्स में, या सिर्फ साइंस के ही ज्यादा उसमें वेटेज दिए जाते हैं सर? यूजीसी एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूजीसी, एज पर द रेगुलेशंस ऑफ यूजीसी, यदि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों की बात करें, उसमें वेब ऑफ साइंस में पब्लिश हो, चाहे वो आर्ट्स के क्षेत्र से हो चाहे कॉमर्स के, दे विल बी वेटेड इक्वली, वेटेज तो इक्वल होगा। ओके सर। और सर यदि वो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश होते हैं तो आई सी इंडेक्सेस जर्नल ना सर? हाँ ओके सर। That is indexed by some research journals are indexed in Scopus, some research are indexed in Web of Science, some journals are indexed in both Scopus as well as Web of Science, and some journals are indexed in all three, Web of Science,
स्कोपस एज वेल एज पबमेड। तो और कुछ ऐसे हैं केवल पबमेड में इंडेक्स्ड है, कुछ ऐसे हैं जो स्कोपस में इंडेक्स्ड है, कुछ ऐसे हैं जो केवल वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। सर एक जर्नल में मेरी पब्लिकेशन हुई थी 2018 में, जब मैं फर्स्ट टाइम मास्टर्स ले रहा था। तो उस पीरियड में सर जो मेरी पब्लिकेशंस हुई है और मेरी उसी रिलेटेड टॉपिक या साइटेशन से मेरी अगर रिसर्च होती है, तो क्या मैं फ्यूचर में वैकेंसीज में या अपने करियर में ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर्स जब मैं कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के जब पेपर्स मैंने पढ़े थे और गेम्स के रिगार्डिंग जब मैंने सर स्टडी किया था, तो कुछ पेपर मेरे उस समय पब्लिश हुए थे। तो क्या सर वो भी काउंट होंगे मेरे करियर में अभी बिफोर पीएचडी? आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू। कैसे? कारण है उसका है सम यूनिवर्सिटीज, कुछ विश्वविद्यालय इंक्लूडेड आवर यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय समेत, जी जिस समय आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिस समय आपका शोध पत्र प्रकाशित हुआ, उस समय या वह जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में था, इन दैट केस दैट विल बी काउंटेड। ओके। और सर मास्टर्स लेवल पे अगर वो पब्लिश होते हैं और वही टॉपिक या वही रिलेटेड सिस्टम्स अगर मेरे रिसर्च में होते हैं, तो क्या वो जर्नल प्री पोस्ट डॉक्टरल या बिफोर पीएचडी वो भी काउंट होंगे? यू कैन एक्सटेंड योर स्टडी। या सर एक मेरे जो एक व्याख्यान को पूरी तरह से आपने ध्यान से सुना हो ना, जी कि what type of papers are published or accepted in reputed journals, तो एक शब्द था नोवेल्टी। यस यदि आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कुछ एक फैक्ट्स हैं, उसमें एक स्मॉल इंप्रूवमेंट एडिशन होगा, दैट विल नॉट बी पब्लिश्ड और काउंटेड। ओके सर। और सर फिजिकल लेवल पे सर आप हमारे भगवान हैं आज के बारे में, तो इसके पहले मैं नहीं जानता था रियली सर। तो सर कुछ रिसर्च टॉपिक सर अगर सर नमस्ते सर। सर एक या दो कोई रिलेटेड करंट का या कोई भी हमारे लिए अगर कोई सर फिजिकल से रिलेटेड कोई रिसर्च टॉपिक अगर सर आज बता सकते हैं तो बताएं सर, हम लोग उसको सभी आदमी सुनना चाहेंगे। हमारे साथ एक दो आदमी और सुन रहे हैं फिजिकल के स्टूडेंट्स। नहीं तो यूपी topic that depends on your interest. You can select your topic from the philosophical studies also, दर्शन अनुसंधान से भी हो सकते हैं। You can take the topic from the case studies, वैयक्तिक अध्ययन भी हो सकता है। You can conduct historical research, ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र से भी हो सकता है। And I have discussed yesterday about the experimental research. I have taken hypothetical example, effect of drug X on Y disease. These are considered as the best type of studies having the cause and effect relationship. तो आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक सटीक प्रायोगिक विकल्प की हमने बात की थी, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, तो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल को फुलफिल करता है। तो उस डिजाइन को लेकर आप बस आपको तो इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स की जगह कुछ ट्रीटमेंट लेना है, ऑन वाई डिजीज की जगह दूसरे वेरिएबल लेने हैं। You can formulate your title in the same way. जी जी। तो सर दो टाइटल मेरे पास हैं, आपने जैसा अभी बताया कुछ भी हो सकते हैं वो रिसर्च से रिलेटेड। एक है सर मेरे पास टॉपिक एनालिटिकल रिसर्च ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है वो। तो क्या ये टाइटल सुटेबल होगा सर फिजिकल के रिसर्च में? और एक है सर ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द प्योरली फिजिकल एजुकेशन। तो सर अगर शेखर जी हाँ same title, Yes, sir. study on the same title can be conducted by adopting different methodology or procedure. उसी Exactly. अध्ययन को विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाकर आप कर सकते हैं। तो you have to decide in advance कि what methodology will be adopted to carry out your study, कि आपके अध्ययन को आयोजित करने के लिए आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि किस प्रक्रिया। You have to decide in advance about the whole journey, starting from the starting line to the end line, finishing line, कि आरंभिक रेखा से लेकर अंतिम रेखा तक आप क्या करने वाले हैं। You have to decide in advance, so that will create no problem in future. Otherwise in between you will face several problems. तो आपने जो एनालिटिकल स्टडी की, analytical studies may be conducted by adopting different procedures. That will depend on
that will depend on the formulation of your objective. आपके सबसे पहले तो आपको उद्देश्यों का निर्धारण करना है. हाँ. So on the basis of the objectives, you have to formulate your hypothesis. Then you have to explain how the data will be collected. Then you have to decide by using which statistical tool the data will be analyzed. कि किस सांख्यिकीय तकनीक द्वारा आप अपने आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे. तो आप पूरी तरह से उसको पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, जिससे कि भविष्य में कोई परेशानी आपको न हो. ओके सर. सर मैं पर्सनली भी आपको किस टाइम में कॉल कर सकता हूं सर, आपके टाइम स्लॉट में, क्योंकि आप तो सर इतने काफी ऑनरेबल. रेगुलर तो शायद इतना नहीं, जब भी आपको जरूरी काम होगा मेरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. सर एक समय होगा ना आपका सर, टाइम स्लॉट की, उस टाइम में आप किसी फर्दर इंडियंस के लिए या अपने स्कॉलर्स के लिए टाइम दे सकते हैं, दिन में, दोपहर में, कभी भी. अब जैसे ऑफिस से जाने के बाद 6 से 7 या सुबह भी 7 से 8 के आसपास, बस सबसे उपयुक्त समय यही है. इवनिंग में या मॉर्निंग में सर? दोनों समय, इवनिंग या मॉर्निंग. डे टाइम में शायद बहुत मुश्किल है. जी. तो सर मॉर्निंग 7 o'clock के आसपास, 7 to 8 o'clock के आसपास बात हो पाएगी आपसे? फिर सुबह भी क्लासेस होती है हमारी, सिंस आई एम फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन, और मैं अपने क्लासेस में सुबह 6:30 टाइम है, तो 6:30 यदि क्लास सुबह नहीं हुई, डेली क्लास नहीं होगी, जिस दिन क्लास नहीं होगी मेरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. सर मैं मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लूंगा सर. आई विल सी यू सर. थैंक यू. नमस्ते सर. ग्रेट सर. यू आर टू ग्रेट सर इन प्रीशियस टाइम टुडे. थैंक यू सर. So any other questions? मैडम जल्दी समाप्त कर दिया क्या? नहीं सर, ठीक है. कल काफी सारी चीजें कवर अप हो चुकी हैं और कुछ लोगों ने तो पूछ भी लिया है. तो लास्टली आई एम आस्किंग, अगर किसी और के कुछ भी पूछना है या कुछ किसी को किसी पर्टिकुलर सेशन करवाना है किसी फ्यूचर में, तो वो अपना व्यू बता सकता है कि फ्यूचर में और क्या करवाया जा सकता है. सर ने कल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की भी बात की है, स्पीसीज की बात की है, डेटा विजुअलाइजेशन की बात की है. तो अगर किसी की कोई पर्टिकुलर क्वेरी हो कि फ्यूचर में हम ये चीज करवा सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर, सिंस वी आर हैविंग 10 more minutes to wind up. Ma'am, can please allow a single question to my honorable sir? Again. Sure, sir, but I request you to do not ask question in a very elaborative manner that need a discussion. So if the question is brief, you please go ahead, sir. Okay, ma'am. This is my related subject and research matter, ma'am. So this is a very important to us. सर एक टॉपिक था मेरा, अभी मैंने आपको जैसे याद तो उतना नहीं था मुझे, लेकिन अभी मैंने देखा अपना पेपर, तो ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द प्योरली फिजिकल एजुकेशन. तो सर ये परफेक्ट होगा मेरे करियर के लिए? These types of topics should be avoided. Descriptive studies, it means you are going to construct the profiles or you have to characterize something. So instead of that, you should elaborate the study. एक कभी चलन था इस तरह के अध्ययन का कि construction of the profiles, construction of you should avoid these topics. सर मेरे लिए समय दीजिएगा, अगर इसमें आपत्ति है सर तो कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको होल्ड करता हूँ यहीं पे, क्योंकि मुझे इस पे शक था कि शायद ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये ओल्ड सिस्टम से ही मुझे पता चला था. जी जी सर नए रिसर्च टॉपिक के लिए सर मैं आपसे जुड़ा रहूंगा. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, sir. Any other queries? Otherwise, we are going to wind up the session. May I ask? Please, ma'am. गुड इवनिंग सर. आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा. और सर मुझे कुछ पूछना है आपसे. जैसे मेरे स्कोपस में पेपर पब्लिश हो चुका है, बट मैंने आईडी नहीं बनाया था, तो क्या मैं अब आईडी बना सकती हूँ उसमें? यस मैडम, क्यों नहीं बना सकते आप? या अच्छा सर, और ऑर्किड में भी मतलब मैंने अभी तक आईडी बनाया नहीं है, तो दोनों में सेम टाइम बना सकती हूँ मैं? हाँ, सेम टाइम आज ही बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं. या थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.
Any further queries, please? Hello. I'm so Yes, sorry. ma'am. I've been raising my hand once again. Sir, I just wanted to understand for the social sciences, publications or the researches, is it a SDG is a good topic for go ahead? Sustainable Development Goals. Madam, uh, without knowing about the complete detail of the topic, complete objective of the study, methodology of the study, it is I'm just giving a brief, sustainable development is a big one. what type of study you want to conduct? Yeah, I I'll see that in also a later. conducted, and I am conducting a study on sustainable development also. Okay, that's good. The study may be conducted, but that depends on the nature of the study. If you want to conduct a comparative study, a relationship study, or predictive study, whether you are using descriptive I'll study. go for implications actually, implication part, and thinking on one of the I'm going to take one of the goal, any of the goal which is prominent in that. So actually, I heard that Scopus I think that UNO described 14 goals, or how many goals are there? 17 goals. Johan is 14 are the main. 17 goals are there. Madam, for example, you can conduct a study impact of suppose a specific type of training or specific type of practice is there. Yes. Impact of meditation on sustainable goals. You can take two groups. One group meditation practitioners, one group non-practitioners. You can compare. Is there any impact of meditation on sustainable development goals? Sir, my question is that whether it will be whether those points are any for the Scopus entry indexing. Yes, this is what exactly. Yes, you can publish. You will find several articles on sustainable development, and these are published in Scopus Web of Science journals. But that depends. The sustainable development goals can be measured by using different tools. You have to see whether work on that tool fulfills the validity and the reliability of the instrument. By using which instrument you are going to measure the goal. That matters actually. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Any other questions? I think all the questions has been taken right now. So I'm lastly calling for if there any question from your side. Okay, I think there is no question, sir. Okay, sir. I would like to ask you if there is any concluding remark you want to give, any message to the students who have joined here, any participants. I have given, madam, every message I have given during my presentation. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful session. And I just wanted to say that research is an ocean. And as a researcher, how you are going to contribute it on the existing literature, on the existing knowledge, is not only possible to doing right things, but it is possible through doing the things in the right manner. And doing things in the right manner is only possible through adopting the paradigms you have taught us right now. Sir, in the 2 days session, we come across the total 18 paradigms, and majorly including the bibliometric analysis, citation analysis, H-index, G index, and then I-10 index, Web of Science, Scopus, Researchers Gate, Research ID, Vidwan, and many more things, sir. So, as a scholar of marketing, I believe that your network is your net worth. So, networking and communicating your work is very important. So, all of you that taught you in the 2 days session, this is very important, and it may be eye-opening session for many of the participants. So, again, thank you so much, sir. So, on behalf of the Research Foundation of India, I, Archie Dubey, Associate Professor in School of Business Studies, Smart City, Raipur, and Chapter Head of Research Foundation of India in Raipur City, I take this opportunity to express my warm gratitude towards Dr. Rajiv Chaudhary, sir, currently working as Professor in School of Physical Education, Head in School of Law, Dean Student Welfare, and Joint Proctor in Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, for this very enlightening session and showing the participants the right path, the right way, that how to conduct the research in a good manner. So thank you, sir, for this wonderful and enlightening and motivational session.
I am showing my sincere thanks to Dr. Saurabh Jain sir, CEO, Dr. Ashok Kumar Gupta sir, CMD, Dr. Ajay Jain sir, National Coordinator, and all the officers of Research Foundation of India, all the members of Research Foundation of India for their continuous support, encouragement of conducting such kind of programs. I'm also thankful to all the participants for joining us, for trusting us, who have joined this program, for your all patient listening. I'm thankful to all the technical supporters for being there, from initiating this program to the ending of this program, recording this program. I'm thankful to all the people who are directly and indirectly associated with the program and contributing here in anyhow manner. And last but not least, I am thankful to the Almighty God for making this 2 days session a very grand success. So once again, thank you so much all. Sir, I hope that your blessings, your knowledge and your encouragement we will get in future also, and hope to see you connect in the future. Once again, thank you to all. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you.